Hello students, welcome to my maths classes. Today in the MCQ series of class 12, we are going to take some more questions, MCQs on inverse trigonometric functions. So in most of the questions, I am going to discuss you some short tricks to solve these MCQs quickly. So I want you people to solve each and every question with me. So let's take our first question. Your first question is the domain of y is equals to cos inverse of x square minus 4. So you have to find the domain of cos inverse of x square minus 4. तो domain आपका क्या होता है? Those values of x for which your function y is defined. तो आपको x की वो वाली वैल्यूज बतानी है जिसके लिए आपका फंक्शन डिफाइंड हो. Since it is an invertible function, so cos of y can be written as x square minus 4. Now you know that cos of anything must lie in between minus 1 to 1. So x square minus 4 must lie in between minus 1 and 1. अगर आप तीनों में 4 ऐड करते हैं then 3 must lie in x square और ये क्या बन जाएगा 4 ऐड करने पे 5. तो so you have got two inequalities. First one is x square must be greater than equals to 3 and second one is x square must be less than equals to 5. अब x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 कब होता है? आपके पास ये एक वो होता है x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a स्क्वायर अगर कहीं होगा तो आपका माइनस a और a से के अपोजिट साइड मतलब माइनस a से लेस और a से ग्रेटर पर आपके x मस्ट बी लेस देन इक्वल्स टू माइनस a और x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू a. तो यहाँ पर योर 3 कैन बी रिटन एज √3 होल स्क्वायर. सो x will be less than equals to minus √3 और x can take should be greater than equals to positive √3. तो आपकी is this inequality will give you this domain and x square must be less than equals to 5. तो यहाँ पर x square is less than equals to a square कहीं भी आपकी ये inequality आती है then you will get कि माइनस a से a के बीच के सारे points. So x can be greater than equals to minus a and less than equals to a. तो यहाँ पर आपका 5 can be written as √5 whole square. So x can be greater than equals to minus √5 and less than equals to √5. अब आपके ये दो डोमेन आ गए but you have to take intersection of these two domains. अब फर्स्ट डोमेन आपका क्या है? माइनस √3 से √3 माइनस √3 से लेस वाले सारे पॉइंट्स या माइनस पॉजिटिव √3 से ग्रेटर देन वाले सारे साइन x. और ये सेकेंड डोमेन विल से कि माइनस √5 और √5 के बीच के सारे पॉइंट्स. सो द कॉमन डोमेन विल बी दीज पॉइंट्स and these points. So the domain of y will be minus 5 to minus 3 minus √5 to minus √3 union √3 to √5 √3 to √5. So which option is correct? Your option C is correct. Your next question is the domain of the function defined f(x) is equals to sin inverse x plus cos x. आपको इस फंक्शन का डोमेन निकालना है. Now if you know that your function is defined as the sum of two functions. What is your function? Your function f(x) is sin inverse x plus cos x. So your function is defined as the sum of two functions.
So the domain of your function is the intersection of the domain of these two functions. So first of all, we are going to find out the domain of sine inverse x. Now we know that the domain of sine inverse x is -1 to 1. आपने साइन इनवर्स x का डोमेन रेंज पढ़ा है. साइन इनवर्स x का डोमेन -1 to 1 होता है, रेंज -π/2 to π/2 होती है. So the domain of sine inverse x is -1 to 1 and the domain of cos x is equals to cos x का डोमेन. cos x आपका पूरे रियल लाइन पे डिफाइंड होता है. So the domain of your function cos x is the whole real line. Now what we are interested in? We are interested in the domain of f, and the domain of f is the intersection of these two domains. So -1 to 1 इंटरसेक्शन आर, और रियल लाइन में का इंटरसेक्शन जब आप -1 से 1 के साथ लेते हैं, देन यू विल गेट -1 to 1. So your C option is correct. Your next question is the value of sine of 2 sine inverse 0.8. So you have to find the value of sine 2 sine inverse 0.8. तो आपको अगर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, you know that sine inverse of 0.8 will give you an angle. So let us suppose that this is alpha. So let alpha is equals to sine inverse of 0.8. Then since sine is an invertible function, so sine alpha will give you 0.8. Now what we are supposed to find? We are supposed to find the value of sine to alpha. This is alpha. So we are going to find out the value of sine to alpha now. Now sine to alpha is equivalent to 2 sine alpha and cos alpha. Using half angle formula, you can write sine to alpha as 2 sine alpha cos alpha. Now sine alpha की वैल्यू आपके पास है, and cos alpha, you know that square is equivalent to square root of 1 minus sine square alpha, and that is equals to 1 minus 0.8 whole square. That is this is 0.64, or we can say that 0.36 or 0.6. So cos alpha is equals to 0.6. So sine alpha is 0.8 and cos alpha is 0.6. So we will get, this is 12 into 8, 9. So 0.96 is the value of your expression, and your C option is correct. Your next question is, if sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z is equals to 3π/2, and you are also given that the f of 1 is 1, and you are given a property for this function that f of p plus q is always equals to fp into fq. आपको इस फंक्शन की एक प्रॉपर्टी भी गिवन है, फंक्शन की वैल्यू एट 1 भी गिवन है. Then you have to find the value of this expression. You have to evaluate this expression. Now consider this thing, that sine inverse x plus sine inverse y plus sine inverse z is equals to 3π/2. Now we know that the inverse function, they all are sine inverse function, and sine inverse of anything, not only x, sine inverse of anything will lie in between -1 to 1, -π/2 to π/2. तो साइन इनवर्स ऑफ एनीथिंग की मिनिमम वैल्यू -π/2 हो सकती है, मैक्सिमम π/2 हो सकती है. नाउ दे आर सेइंग कि दे आर गोइंग टू ऐड, जब ये तीनों ऐड होते हैं तो 3π/2 होते हैं. दैट मीन्स इन तीनों की इंडिविजुअली दे ऑल मस्ट बी इक्वल्स टू π/2, क्योंकि अगर कोई π/2 से छोटा होगा तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा टू मेक इट इक्विवेलेंट टू 3π/2. तो आपको वो पॉसिबल नहीं है, बड़ा होना पॉसिबल नहीं है. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन इज π/2, सो दे मस्ट बी इंडिविजुअली इक्वल्स टू π/2.
sin inverse x, sin inverse y and sin inverse z is equals to pi by 2. तो x भी आपका sin pi by 2 आ गया, that is 1, y भी 1 and z भी 1. तो सबसे पहले तो आपके पास x, y, z तीनों equals to 1 आ गए हैं. तो x, y, z की वैल्यू you have got is equals to 1. Now what is f1? f1 is already given 1. f2 और f3 आपको और evaluate करने हैं to evaluate the value of this expression. Now what is f2? Now we know that f1 is 1. तो f2 क्या हो जाएगा? f2 देखो, f2 को आप 1 f of 1 plus 1 लिख सकते हैं. ऐसा हमने क्यों लिखा? क्योंकि इस फंक्शन के लिए वी नो द प्रॉपर्टी कि अगर आपको 1 p plus q की इमेज निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू f of p into f of q. तो 2 can be written as 1 plus 1 and that can be using that property of this function. This can be written as f of 1 into f of 1. और f of 1 आपका 1 given है तो 1 into 1 will be equals to 1. तो f2 भी आपका 1 आ गया है. Similarly, you can evaluate f3. f3 can be written as f of 2 plus 1 and using this property you can write it f2 into f1. और f2 भी आपका 1 है, f1 भी 1 है, तो 1 into 1 will give you 1. तो f1, f2, f3 they all are equals to 1 and x, y, z भी आपके 1 है. Now consider the value of the function. Consider the value of the function 1 raised to power 1 plus 1 raised to power 1 plus 1 raised to power 1 minus 1 plus 1 plus 1 upon the same expression. So this is 1 plus 1 plus 1 3 minus 3 upon 3, that is 1. So 2 is the value of your expression and your option A is correct. Your next question is, if u is equals to cot inverse of root tan alpha minus tan inverse of root tan alpha, then you have to evaluate tan of pi by 4 minus u by 2. Then, so consider the given thing. You are given that u is equals to cot inverse of root tan alpha minus tan inverse of रूट tan अल्फा. आप क्या करेंगे? आपको क्योंकि जो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसमें सिर्फ 10 रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो कॉट को आप tan में कन्वर्ट कर सकते हैं. यूजिंग द फॉर्मूला वी नो दैट tan इनवर्स x और प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2. अगर एंगल इक्वल होता है, इफ द इनपुट्स आर इक्वल, देन tan इनवर्स x और cot इनवर्स x विल गिव यू पाई बाय 2. तो यहाँ पर रूट tan अल्फा दोनों का इनपुट सेम है. सो योर कॉट इनवर्स ऑफ समथिंग, कॉट इनवर्स समथिंग कैन बी रिटन एज पाई बाय 2. तो कॉट इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x. सो इट कैन बी रिटन एज पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स रूट tan अल्फा. And here minus tan inverse of root tan alpha आपका already है. They can be combined. So this can be written as minus 2 tan inverse of root tan alpha. अब आपको क्या करना है? tan की वैल्यू लेके आनी है, तो tan इसको यहाँ शिफ्ट कर लो लेफ्ट में. Then 2 tan inverse of root tan alpha is equals to pi by 2 minus u. u वहां पर शिफ्ट हो जाएगा. Now 2 can be taken to the right, so tan inverse of root tan alpha can be written as 2 से जब डिवाइड करोगे you will get pi by 4 minus u by 2. तो आपके पास pi by 4 minus u by 2 क्रिएट हो गया. Now since tan is an invertible function, तो tan को you can shift here. तो रूट tan अल्फा कैन बी रिटन एज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस u बाय 2 and you have got the value for tan of pi by 4 minus u by 2 and that is equals to root tan alpha. So your option A is correct.
Your next question is, if cos inverse of x is greater than sin inverse of x, then you have to find the domain of x, the values of x, कि x की किन values के लिए such situation happens. So first of all, consider this inequality that cos inverse x is greater than sin inverse of x. यहाँ पे दो functions involve हो रहे हैं, inverse trigonometric functions, और आप इनको दोनों को सेम उसमें लिख सकते हो. sin inverse x can be converted into cos inverse x. So this can be written as, since sin inverse of x plus cos inverse of x is equals to pi by 2, तो sin inverse x can be written as pi by 2 minus cos inverse of x. So replace it with pi by 2 minus cos inverse of x. Now negative cos inverse x यहाँ पर left side पे add होकर it will give you 2 cos inverse of x is strictly greater than pi by 2. Now 2 can be taken there. By dividing by 2 we get that cos inverse x is strictly greater than pi by 4. तो आपको अब वो वाली values of x निकालनी है जिसके लिए cos inverse function will give you greater than pi by 4. Now we know the graph of cos inverse x. What is the graph of cos inverse x? The domain of cos inverse x is -1 to 1 and the range of cos inverse x is 0 to pi. Okay, and so the graph, since cos inverse x is a decreasing function, the graph of it is like this. The graph of cos inverse x is like this. Now if you know the graph, now we are interested कि वो वाली values of x में interest है हमें जहां पर cos inverse x is strictly greater than pi by 4. तो cos inverse x pi by 4 कब है, पहले आप ये चेक करेंगे. तो cos inverse x pi by 4 किस वैल्यू पे होता है? अगर cos inverse of x is pi by 4, that means x is equals to cos pi by 4. That is 1 by root 2. So this point is 1 by root 2. But we are interested कि cos inverse x का ग्राफ कब आपका pi by 4 से बड़ा है. pi by 4 is this line. इससे बड़ा कब है? So these we are interested the values of x for which this graph is showing. Now they are the values of x must be equals -1 in between -1 to 1 by root 2. So that must implies कि cos inverse x का ग्राफ pi by 4 से बड़ा कब है? When x is lying between -1 to 1, क्योंकि यहाँ strict inequality है, pi by 4 के strictly greater than है. So there should be a strict inequality here. Okay, so which option is correct? So your option C is correct. Your next question is, if alpha is equals to tan inverse of 10 5 pi by 4 and beta is equals to tan inverse of negative 10 2 pi by 3, then you have to find get a relation between alpha and beta. तो सबसे पहले अल्फा और बीटा आप कैलकुलेट करोगे. So to find the value of alpha, consider this expression. Since alpha is equals to this, so tan of alpha is equals to tan of 5 pi by 4. अब देखो अल्फा को आप 5 pi by 4 से इक्वेट नहीं कर सकते बिकॉज 5 pi by 4 इज नॉट इन द रेंज ऑफ tan इनवर्स. आपने tan इनवर्स का इनपुट है ये, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? -π/2 to π/2. वहीं पर इन्वर्टिबल होता है tan, तो दिस इज नॉट इन बिटवीन -π/2 to π/2, तो इसे आपको रिड्यूस करना पड़ेगा सबसे पहले. एंड इट कैन बी रिटन एज पाई प्लस π/4. अब पाई प्लस π/4, पाई प्लस थीटा के केस में इन द थर्ड क्वाड्रेंट योर tan is positive, so it will give you
tan pi by 4. Now pi by 4 is within the range of tan inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2. So you can equate alpha is equals to pi by 4, or you can write 4 alpha is equals to pi. Lock it. Now consider your beta. Beta is equals to tan inverse of negative tan 2 pi by 3. तो आप tan को सबसे पहले इन्वर्ट करके लिख सकते हैं. tan बीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ tan 2 pi by 3. Now what will you do? 2 pi by 3 can be written as pi minus pi by 3, and pi minus pi by 3 will come in second quadrant, and in the second quadrant your tan is negative. So this will give you negative tan pi by 3. तो एक नेगेटिव ऑलरेडी साइन है आपके पास, so it will become positive tan pi by 3. Now tan beta is equals to tan pi by 3 आ गया, and pi by 3 is within the range of tan inverse, that is minus pi by 2 to pi by 2. So you can equate beta with pi by 3, or you can write 3 beta is equals to pi. You can log this statement also. Now 1 and 2, these two expressions imply that 4 alpha must be equals to 3 beta, and this is your answer. So option A is correct. Your next question is the value of the expression tan of sin inverse x plus cos inverse x upon 2, where x is equals to root 3 by 2 is equals to. तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है at a particular value of x. But अगर, so let us consider your expression first. Tan of sin inverse x plus cos inverse x upon 2. बट अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो sin inverse x plus cos inverse x is always equals to pi by 2. तो आपको it will give you pi by 4, and tan pi by 4 is 1. तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी. द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, एंड योर ऑप्शन बी इज करेक्ट. Your next question is the domain of cos inverse of greatest integer function of x is. So you will have to find the domain of cos inverse of greatest integer function of x. So let your function is cos inverse of greatest integer function of x. So you are supposed to find out the values of x. तो अब आप क्या करेंगे? Cos, since cos is an invertible function, so cos y is equals to greatest integer function of x. Now we know that cos y, we know that cos y always lies between minus 1 to 1. That implies your greatest integer function of x will always lies between minus 1 to 1. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स क्या थ्रो करता है? एक इंटीजर थ्रो करता है, और बिटवीन माइनस 1 to 1 आपके तीन ही इंटीजर्स आते हैं, -1, 0 and 1. सो योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स कैन टेक दीज 3 वैल्यूज. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे? -1 कब होता है? When x is lying from -1 to 0. Your value of the greatest integer function is -1, and between 0 to 1, the value of the greatest integer function will throw 0, and 1 कब थ्रो करेगा? Between 1 to 2. तो 1 से 2 के बीच में your value of the greatest integer function will be equals to 1.
तो आपको वही रेंज, वही x की वही वैल्यूज में इंटरेस्ट है व्हेन योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विल टेक दीज थ्री इंटीजर्स. So you have defined your greatest integer function when it is taking these three values. So x की range आपकी क्या आ गई है? That will give you the domain of your function. So x must lie between -1 to 2. -1 include हो रहा है और 2 excluded है. And this is x, the values of x will give you the domain of the function. So your option C is correct. Your next question is, let fx is equals to sin 2x plus cos 2x and gx is equals to x square minus 1. You are defined fx and gx function. Then g of fx, this composite function will be invertible for the domain this. तो आपको ये बताना है कि आपका ये वाला composite function जो है वो कहाँ invertible है. So first of all we are going to define this composite function. So let us start with defining the composite function g of fx. G of anything is defined as x square minus 1. So fx square minus 1. Now fx is what? Sin 2x plus cos 2x square minus 1. So this will give you sin square 2x plus cos square 2x plus 2 sin 2x cos 2x minus 1. Now since the angle is equal, sin square some theta plus cos square theta will become 1. So this will give you 1 plus 2 sin a cos a can be written as sin 2a and minus 1. So plus 1 minus 1 will cancel out and your composite function is defined, g of fx is defined as sin of 4x. तो sin of 4x ये जो composite function है आपको देखना है ये कहाँ invertible है. We know that the sine function is sine function को invertible बनाने के लिए we have to restrict its domain. तो आपका sin 4x is invertible when आप अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बिटवीन -π/2 to π/2, तभी वो इन्वर्टिबल हो पाता है. बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए आपको अपने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तभी आपका साइन फंक्शन विल बिकम इन्वर्टिबल. सो x अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो x विल लाई इन बिटवीन -π/8 to π/8. So the x will show the domain of your function. So the domain of your function is -π/8 to π/8 and our option B is correct.